this is a PERT problem that is given to you. Here in PERT problem, we are given 3 time estimates T of each activity. The activities that are given to you are 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6, and 5 to 6. There are 3 time estimates TO, TM, and TP. TO is optimistic time, TP is pessimistic time, and TM is most likely time. So in case of a PERT problem, you are given 3 time estimates. Now, using these 3 time estimates, we will calculate the expected time of each activity. Formula to calculate expected time is, as you know, TO plus 4 TM plus TP and slash 6. This is the formula that we will use to calculate the expected time of each activity. Okay, now using this formula, we calculate the TE of each activity. So TO is 4 times TM will be 4 plus 1 plus 4, 5 plus 7, 12 divided by 6. So here we will get TE as 2. In case of second activity, 1 plus 7, 8 plus 16. It will be 1 plus 16 plus 7. That is 24 divided by 6 will be divided by 6. It is equal to 4. For this one, it will be 2 plus 8 plus 8 divided by 6. 18 divided by 6 हो जाएगा. So this is equal to 3. Similarly, यहाँ पर होगा 1 plus 4 plus 1, that is 6 divided by 6, that is 1. यहाँ पर होगा 2 plus 20, 2 plus 20 is 22 plus 14, 22 plus 14 is 36 divided by 6. So you will get 6 here. Similarly, here you will get 2 plus 20, that is 22 plus 8, 30 divided by 6, 5. Similarly, here 3 plus 6 into 4, 24. 24 plus 3, 27 plus 27 plus 15, 42 divided by 6, that will give you 7. So these are the time estimates that I have obtained. TE, value of T that we have obtained for this problem, 2, 4, 3, 1, 6, 5, and 7. So this is the
calculation of expected time of each activity. Now all these values TO, TM and TP are not important, only these values are important. So we will write these values in the next table. 2, 4, 3 ये लिखा हुआ है हमारा, एक्टिविटी लिखी हुई है यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में. नाउ कैलकुलेट, वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम EST, EFT, LST and LFT for this problem. So 1 to 2 एक्टिविटी का TE2 है, 1 to 3 एक्टिविटी का TE4 है, ऐसे. तो EST हम लिखेंगे जिस जिस एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 1 है वहां पर EST 0 होगा. EFT के लिए हम इसमें ड्यूरेशन जोड़ देंगे, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा. 2 to 5 एक्टिविटी का EST 2 होगा और इसका EFT 3 होगा. We have added the duration or TE here, and for 3 to 5 activity the EST will be 4 and EFT will be 10. For 4 to 6 activity EST will be 3 and EFT will be 8. For 5 to 6 activity EST will be 10 and EFT will be 17. So these are the values of EST and EFT. Now we will calculate the value of LST and LFT by backward path calculation. For the last activity, LFT will be 17. For 4 to 6 also it will be 17. We will subtract the duration. So we will get here 10 and 5 minus करेंगे 17 में से तो 12 आएगा. Now 3 to 5 और 2 to 5 का LST वही होगा जो 5 to 6 का LST है. तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और यहाँ भी हमारा 10 आएगा. 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा. सिमिलरली वी कम टू एक्टिविटी 1 to 4. इसका LFT वही होगा जो 4 to 6 का LST है. 12 में से 3 गया, 9 आ जाएगा यहाँ पर. फिर 1 to 3 का LFT वही होगा जो 3 to 5 का LST है. तो यहाँ 4 आएगा. 4 minus 4 0 हो जाएगा. यहाँ 1 to 2 का अब हमें वो लिखना है LFT लिखना है, तो वही होगा जो कि 2 to 5 का LST है, दैट इज 9 हियर. 9 लिखते हैं और 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा. नाउ वी कैलकुलेट द टोटल फ्लोट. द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग टाइम्स और फिनिशिंग टाइम्स इज द टोटल फ्लोट. तो हम LST और EST का डिफरेंस लेते हुए टोटल फ्लोट लिख रहे हैं 7. तो 0 9 माइनस 9 minus 0 is again 9. 9 minus 2 is 7. 4 minus 4 is 0. 12 minus 3 is 9. And 10 minus 10 is 0. तो हमारी जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल एक्टिविटीज में दिस वन इज अवर क्रिटिकल एक्टिविटी. ये हमारी एक क्रिटिकल एक्टिविटी जिसका टोटल फ्लोट 0 है. ये 3 एक्टिविटीज हैं जिनका टोटल फ्लोट 0 है. तो ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हुई. और हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ
1, 2, 3, 3 to 5 and 5 to 6, और इस पर्टिकुलर पाथ की जो ड्यूरेशन है वो क्या है 17 वीक्स। अभी हम लिख देते हैं वीक्स में है ये ड्यूरेशन, 17 वीक्स इसकी क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गई। दिस इज क्रिटिकल पाथ and this is our critical duration 17 weeks. Now we also calculate the SD, variance of critical activities. Variance निकालने के लिए हमें अगेन ये वाले टाइम एस्टिमेट्स चाहिए, फर्स्ट स्लाइड में थे। तो TP माइनस TO डिवाइड बाय 6, तो 7 माइनस 1 दैट इज 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो इसकी SD इसका वेरिएंस आया 1। सिमिलरली भी सेकंड एक्टिविटी पे जाते हैं, 7 माइनस 1 6 हो गया, उसका स्क्वायर 6/6 का स्क्वायर, तो अगेन इट इज ऑल्सो 1। यहाँ भी अपना 1 आ गया। दिस इज वेरिएंस SD स्क्वायर, और वेरिएंस इसको अपन वेरिएंस भी कहते हैं। ये वेरिएंस इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। नेक्स्ट हम एक्टिविटी का देखते हैं वेरिएंस क्या होगा। अगेन 8 माइनस 2 6, और 6 डिवाइड बाय 6 इज 1, और 1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 ही होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी का देखते हैं, 1 माइनस 1 दैट इज 0, इसका वेरिएंस 0 है, इस एक्टिविटी का वेरिएंस 0 है। नेक्स्ट एक्टिविटी का देखते हैं, 14 माइनस 2 दैट इज 12 डिवाइड बाय 6 इज 2, तो 2 का स्क्वायर, इसका वेरिएंस है 4, इस एक्टिविटी का वेरिएंस है 4। नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है, उसका वेरिएंस निकालने के लिए 8 माइनस 2 6, और 6 डिवाइड बाय 6 इज 1, तो इसका वेरिएंस भी 1 ही आया। सिमिलरली लास्ट एक्टिविटी का वेरिएंस निकालते हैं हम, 15 माइनस 3 दैट इज 12 एंड डिवाइड बाय 6, तो 6 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा सबका वेरिएंस निकल आया। सिग्मा से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, तो हमको वेरिएंस पाथ का वेरिएंस भी निकालेंगे हम। तो पाथ का वेरिएंस, क्रिटिकल जो पाथ है उसका हम वेरिएंस निकालने के लिए हर इंडिविजुअल एक्टिविटी का जो वेरिएंस है उसको प्लस कर देंगे 1, and the variance of activity 3 to 5 is also is 4, and that of activity 5 to 6 is also 4. Therefore the variance of the entire path, critical path, is 9. Now in case of a PERT problem, you may also be given that what is the probability of completing this project in a particular estimated time. So here we have certain whatever we have calculated, I have written over here. Critical path is 1 to 3, 3 to 5, and 5 to 6. Critical duration is 17. Variance of the path is 9. This is 17 weeks, and this is also 9 weeks. Standard deviation of path is 3. Standard deviation is the square root of variance. So whatever is the variance, we take the square root of that and we get the standard deviation. So standard deviation of the path is 3. Now we want to calculate the probability that the project will be completed in 19 weeks. What is the probability that this project is completed in 19 weeks? So here we have the formula. For this we have to calculate Z. Z is equal to expected duration minus critical duration divided by standard deviation.
So 19 minus 19 is the expected duration. We want to complete this project by 19 weeks. और critical duration हमारी है 17. 19 minus 17 divide by the standard deviation, that is 3. So the value of Z comes out to be 2 divided by 3, that is 0.667. Okay. Now we need to calculate we need to find the value of probability against Z is equal to 0.667 or 0.67 we say. So this is the Z table. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है उसमें हम देखेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में हमें 0.67 पे वैल्यू देखेंगे. ये रहा हमारा 0.6 और this 0.6 and 7. So 0.67 में Z की वैल्यू 0.67 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0.74857. Okay, for Z is equal to 0.67, the value of probability is 0.7485. So that is what we will write over here. So the expected duration, the probability that the project will be completed in 19 weeks is 74.84. 74.857 था, 74.86 कह देंगे हम इसको. So this is the way in which we solve the PERT problems. As you have seen in case of PERT is a probabilistic technique. So here we get a probability of completing a particular project in a given duration. तो 17 तो इसका critical duration आया, लेकिन इसकी probability है 95% चांसेस है कि हम 17 वीक्स में खत्म कर लेंगे और 5% चांसेस है कि उससे प्लस माइनस कुछ हो जाए. तो 19 वीक्स में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 74%. इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन अ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन. अगर ये 19 की जगह हम इसको 20 कर दें तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो 20 minus 17 डिवाइड बाय 3, तो ये 1 आ जाता. Z is equal to 1. 100%. 1 Z is equal to 1. टेबल में देखें तो 999 ये रहा 1.0. इस टेबल में अगर हम देखें 1 के अगेंस्ट में Z इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये 1.0 ये वाली वैल्यू, तो 0.84134. 84% चांसेस होंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को 20 वीक्स में कंप्लीट कर लें. इन दिस वे वी विल गो ऑन. जैसे जैसे हम ये जो ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट PERT. SD को लिखने का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस लिखने का जो फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिख देती हूँ. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, TP माइनस PO डिवाइड बाय 6 और इसको हमने स्क्वायर कर दिया.
रेज टू पावर 2। ये हमने यूज किया है इसके लिए, वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये वेरिएंस हमने जो कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। So in this way we will calculate the value of variance in case of PERT, and standard deviation is square root of variance. Thank you.